जय जगन्नाथ सांग मैंने मुझे स्वागत करुच्ची आ गोटे नुआ वीडियो रे। तो आज आम देखा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस ता रिलेटेड जहाँ भी PYQs आसी माने डिफरेंट पेपर्स रे सेगुड़ा डिस्कशन करवा। आ रिलेटेड तमें टेलीग्राम रे क्विज मध्य एपियर कर परिबो, टेस्ट गोटे ऑनलाइन टेस्ट। सो चलंतु आरंभ करवा। देखो रंगनाथन को बुक अनुसार तार कौन कौन क्वेश्चन आछि बुक रिलेटेड। In which year did S.R. Ranganathan formally enunciate the 5 laws of library science? एटा है आमर 1928। 1928 रे से कौन करथिले कॉन्सेप्चुअलाइज करथिले फॉर्मुलेट करथिले। आ आइडिया कॉन्सेप्ट केबे हेतिला 1924 रे, एनुंशिएट बा फॉर्मुलेट करथिले 1928 रे, बुक पब्लिश हेतिला 1931 रे। In which year was the book 5 Laws of Library Science first published? हेतिला 1931। आउ किए पब्लिश करथिला तार रिलेटेड भी क्वेश्चन आसे। इट वाज जॉइंटली पब्लिश्ड बाय मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड एडवर्ड गोल्डस्टोन लिमिटेड, लंडन। Who was the first publisher of the 5 laws? So Edward Goldstone Limited, London. Where was S.R. Ranganathan working when he enunciated the 5 laws of library science? As a librarian of the University of Madras. ସେତେବେଳେ ସେ ଫର୍ମ କରିଥିଲେ। Who hold the copyright of the 5 laws of library science reprinted in 2006 Srels? Srels होची शारदा रंगनाथन एंडोनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। तार फाउंडर होचंदी डॉक्टर S.R. रंगनाथन। से फाउंड करथिले 1961 रे। से ऑर्गेनाइजेशन पाखरे कॉपीराइट अछि। वर्तमान बुक गुडा को ESS पब्लिकेशन द्वारा भी पब्लिश होछि। Which law is dedicated more than half the total pages of the book? 5 laws of library science। तो more than half dedicated है सेकेंड लॉ, सबठु अधिक लिखा जाई छै एटा। The book devotes 3 full chapters 2, 3 and 4 सेकेंड लॉ पे, अन्य लॉ गुडा सबठु अधिक। तो आकु को जाए दिग्विजय। S.R. Ranganathan is known as the father of library science in which country? एटा है इंडिया। When was the documentation research and training center formally inaugurated by Ranganathan? एटा आंसर है 1962। तो रंगनाथन फाउंड करथिले DRTC बेंगलोर अंडर द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। रंगनाथन कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? 1933। तो रंगनाथन को फर्स्ट पब्लिश हेतिला 1933 आफ्टर द 2 year of 5 laws book। Which prestigious award was conferred on Dr. S.R. Ranganathan by the government of India in 1957? Padma Shri। तांकु फर्दर ऑनर कराइला नेशनल रिसर्च प्रोफेसर इन लाइब्रेरी साइंस 1965 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आसे 5 लॉ को आम आइडेंटिफाई को टाइप रो करिबा, तार रिलेटेड क्वेश्चन आसे। देखो व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? फर्स्ट लॉ होची हमरो बुक्स आर फॉर यूज। जे ओल्ड ट्रेडिशन जो गुडा बुक्स गुडा को चेन करी की रखा हैतिला ताको फ्री बा एक्सेसिबल करिया पे थिला एटा। नेक्स्ट व्हाट इज द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस? एवरी रीडर हिज और हर बुक। मीन्स बुक्स आर फॉर ऑल regardless of sex, caste, age, physical ability, समस्त हम पे। What is the third law? Third law होची every book its reader। एटा होची book oriented, means every book in the library should find its appropriate reader। What is the fourth law? Fourth law denote करे save the time of the reader। What is fifth law? Fifth law denote करे library is a growing organism। नेक्स्ट आछि तार इम्प्लिकेशन
लॉस गुड़ाकर इम्प्लिकेशन उपरे क्वेश्चन आसे लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी बिल्डिंग इज एन इम्प्लिकेशन ऑफ व्हिच लॉ फर्स्ट लॉ रे आमे देखिदेले ता लोकेशन रिगार्डिंग आउ कौन वर्किंग आवर्स लाइब्रेरी बिल्डिंग ऑफ फर्निचर स्टाफिंग एगुड़ा थिला तार इम्प्लिकेशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी शुड बी एट ए डेस्क प्लेस एट ए सेंट्रल प्लेस जोटी कि समस्त एक्सेस करि परिबे Which law of library science emphasizes the obligation of the state, the library authority and the reader? एटा करे हमरा सेकेंड लॉ रो इम्प्लिकेशन रे आसे स्टेट बाय लेजिस्लेशन लाइब्रेरी अथॉरिटी स्टाफ ए सब गुड़ा Which of the 5 laws satisfies services for differentially abled users? एटा है जो हमरा सेकेंड लॉ Books for all is the variant form of which law? Second law. To satisfy which law have the libraries adopted the open access system? तो एटा है जो हमरा थर्ड लॉ every book its reader. Provision of stack room guides, bay guides and tire guides in a library is an implication of which law? To save the time of the user. एटा है फोर्थ लॉ टू सेव द टाइम ऑफ द यूजर विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फसाइज रीडिंग ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी फिफ्थ लॉ सिस्टमेटिक रिमूवल ऑफ ऑब्सोलेट मटेरियल्स द ऑर्गेनाइजेशन विच ceases to grow will petrify or perish relate to which law? It relate to fifth law. Book selection in a library is governed by which of the following 5 laws? एटा govern करे the first 3 laws. Law 1, book must be accessible and usable. Law 2, every reader must find their book. Law 3, every book must find its reader. Centralized cataloging is an implication of which law? एटा है जो हमारा फोर्थ लॉ टू सेव द टाइम ऑफ द रीडर किसी एप्लाइड सिनारियो बेस्ड भी क्वेश्चन पचार था फर्स्ट देखो ए स्टूडेंट फाइंड बुक्स लॉक्ड इन कपबोर्ड रेस्ट्रिक्टिंग फ्री एक्सेस तो ये को लॉ भायोलेट होती देखो ऑप्शन देला फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ फोर्थ लॉ एटा है हमारा थर्ड लॉ एवरी बुक इट्स रीडर तो बुक लॉक होगी रही एप्रोप्रिएट रीडर पाखक एक्सेस मिल पारनी ए क्लास 10 स्टूडेंट इज गिवन ए PhD लेवल बुक दैट डज नॉट सूट हर नीड्स व्हिच लॉ इज वायोलेटेड तो को लॉ वायोलेट है एटा हो थर्ड लॉ कौन एवरी बुक इट्स रीडर आर मीनिंग कौन एप्रोप्रिएट रीडर नुह गोटे जूनियर स्टूडेंट को जब हम PhD लेवल बुक देवा से एप्रोप्रिएट हम कि रॉन्ग बुक रॉन्ग रीडर पाखरे पहुँच जाइए ए लाइब्रेरी हैज पुअर एंड डैमेज फर्निचर कॉजिंग डिस्कम्फर्ट टू द रीडर व्हिच लॉ इज वायोलेटेड तो फर्निचर रिलेटेड लॉ कौन थी आमर फर्स्ट लॉ ए रीडर वेस्ट considerable time searching for a book due to poor self arrangement which law is being violated it violate करे fourth law A library with a large collection has not added any new books or staff in 15 years. Which law is violated? Fifth law, as the library is a growing organism. The modern interpretation of extension upre किसी question. Who gave the sixth law of library science? Every reader his or her freedom. एटा देइथिले जेम्स आर रेटिग 1992 रे कंसीव करथिले लॉर्ड हु अप्लाइड रंगनाथन 5 लॉस टू द वेब इन 2004 एलिरिजिया नोरुजी आ रिलेटेड भी क्वेश्चन आसथिला एप्लीकेशन ऑफ 5 लॉ टू द वेब तो से कौन करथिले ए टाइप रो करथिले वेब रिसोर्सेस आर फॉर यूज द वेब प्रोग्राम इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म वेब इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म ए टाइप रो according to OCLC's reordering Ranganathan's
Conway and Feniel 2014. What is the new first law? New first law होची save the time of the reader, reflecting modern use of the priorities. से ताको rearrange करथिले, first को आनिथिले save the time of the reader, second every person his or her book, third books are for use, fourth every book its reader, fifth library is a growing organism. What are the set of norms, precepts and guides to good practice in librarianship known as 5 law of library science? Which law did Ranganathan himself remark as the trivial truism? Means तुच्छ कथा, simple जिनस, library science and scientific method. So that is your first law. जेमिदी एग्जांपल देथिले न्यूटन जेमिदी फर्स्ट लॉ बाहर करथिले से टाइप रो. Michael Gorman proposed 5 new laws of librarianship in which year? से प्रपोज करथिले 1998 रे, जेतेबेले से एएलए रो प्रेसिडेंट थिले. तांकर बुक आवर सिंगुलर स्ट्रेंथ सेथिरे से प्रपोज करथिले, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी सर्व ह्यूमैनिटी, प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज. Which law enunciated by Ranganathan has been reinterpreted by OCLC research group? Develop the physical and technical infrastructure need to deliver physical and digital material. तो एटा को लॉ हेजिबो, फर्स्ट लॉ हेजिबो. तार कोर आइडिया कौन थिला? एनेबलिंग एक्सेस समस्त को देबा. कार्ल सिम्पसन रिवाइज रंगनाथन लॉज टू रिफ्लेक्ट रिचनेस of media in which year? एटा थिला हमर 2008 रे. सेकंड देथिले media are for use, every patron his information, every medium its user, save the time of the patron, the library is a growing organism. एटा थिला तांको डेफिनेशन. आ किछटा क्वेश्चंस रहला जोटा कि 5 लॉ रिगार्डिंग पचरे बुक रिगार्डिंग. तो गोटे क्वेश्चन अछि, who wrote forward of book 5 laws of library science? एटा क्वेश्चन आसे. तो फॉरवर्ड लिखिथिले सर पी एस शिवस्वामी, SIVASWA में शिवस्वामी अय्यर. आ गोटे क्वेश्चन आसे, इंट्रोडक्शन पार्ट के लिखिथिले? इंट्रोडक्शन लिखिथिले मिस्टर WCB शेयर्स. ये दुईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन. सो थैंक यू. ए वीडियो रे एतिकी. वीडियो भल लागिथिले वीडियो को शेयर आ लाइक कर दियंतु. आर रिलेटेड क्विज आपन को टेलीग्राम ग्रुप रे अवेलेबल हे जिवो, आपन जाकी अटेम्प्ट करि परिबे. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.